Good morning, friends. Today we will start with capital gains. Okay. Now, we have done as of now 3 heads of income. Income from salaries, and then we have done income from house property, and then we have done PGBP. Now, I have told you income will be either exempted or it will be taxable. If it is exempted, then all those exempted incomes are mentioned in section 10 of Income Tax Act 1961. And if it is taxable, then we have to first determine under which head of income it is taxable. Okay. So, for every head, there is a one chargeability section, and if conditions of those chargeability sections are satisfied, then income will fall under that particular head. So, for capital gain, we have chargeability section 45. Any profit or loss arising from transfer of capital asset will be chargeable to tax under the head capital gains in the year in which transfer took place. Subject to exemptions under section 54. So basically, whenever you sell any asset, right, you might have profit or loss arising from sale of such asset. So that profit and loss will be capital gain, right? Asset बेच के जो profit आता है ना, right? अपने accounts में किया है, कई सालों तक अपने asset को use करते हैं, and then after some period of time we sell those assets, right? So any profit or loss arising from transfer. Now, what does the word transfer here mean? Transfer means sale. Right? Exchange by whatever name called. Compulsory acquisition under any law by government. Conversion of capital asset into stock in trade. तो ट्रांसफर का डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है, मतलब ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से हम लोग को देखना पड़ेगा, राइट? तो ट्रांसफर खाली मतलब ये नहीं होता कि सेल. ट्रांसफर मींस सेल, कंपलसरी एक्विजिशन. अगर मैंने कैपिटल एसेट को मेरे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैं उस चीज का डीलर बन गया, राइट? सपोज आई हैव इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट. नाउ after some period of time, I have decided that I want to be a real estate dealer. So those investments now will be held as stock in trade, right? Sale, exchange, compulsory acquisition, conversion of capital asset into stock in trade. ये सब चीज मेरे ट्रांसफर के डेफिनेशन में आएगा, थोड़ा बड़ा है. Similarly, the word capital asset, this also needs to be defined. We will deal it later on. Right? जिस साल हमने सेल किया उसी साल कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. Will be chargeable to tax under the head capital gain in the year in which transfer took place.
सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। सपोज आई हैव सोल्ड वन हाउस एंड उसके बदले में मैंने एक दूसरा घर खरीद लिया, तो जो भी बेच के जो भी प्रॉफिट आया उस पर टैक्स नहीं लगेगा इफ आई बाय अ न्यू हाउस, राइट। सपोज आई सोल्ड अ हाउस एंड मैंने उन पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में, देन ऑल्सो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, राइट। So the chargeability section says it very clear. Any profit or losses arising from transfer as of now you simply understand sale. Any profit or loss arising from transfer of a capital asset, right? जैसे स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता है, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया ये कैपिटल एसेट नहीं है, कोई पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। सो कैपिटल एसेट बेसिकली इमूवेबल होना चाहिए, बिजनेस वाला होना चाहिए, राइट। सो ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। सो एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट will be chargeable to tax under the head capital gains in the year in which transfer took place subject to exemption under section 54. Now 54 भी है, 54B है, 54F है, right? 54EC है। So मैं section 54 मतलब इसमें सारा sections आ गया। Clear? आइए। So next I will explain you what comes under capital asset. क्योंकि वही एसेट का सेल कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा जो कैपिटल एसेट नेचर का है, राइट। एंड इसका डेफिनेशन इज कंटेन्ड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। Any property held by an assessee whether for business or not, right। इसके कुछ कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, मतलब ये कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। जैसे स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। पर्सनल मूवेबल कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। सपोज बिजनेस में एक मोटर कार है, उसको बेच दिया गया है ना, मोटर कार मूवेबल है बट वो पर्सनल नहीं है, तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। राइट। मेरा एक रेसिडेंशियल हाउस मैंने बेचा है, रेसिडेंशियल पर्सनल है बट इमूवेबल हो गया, समझ गया ना। तो जो पर्सनल मूवेबल है उसी को हटाया गया है कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, अगर कोई अर्बन एरिया में मेरा जमीन है तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। गोल्ड बॉन्ड्स, राइट। पर्सनल मूवेबल के एक्सक्लूजन्स हैं, इसका मतलब
These are capital asset. एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन मतलब ये सब कैपिटल एसेट माना जाएगा. ज्वेलरी पर्सनल मूवेबल है बट वो कैपिटल एसेट माना जाएगा. आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन ये कैपिटल एसेट माना जाएगा. ड्राइंग्स कैपिटल एसेट माना जाएगा. पेंटिंग्स और स्कल्पचर ये भी कैपिटल एसेट माना जाएगा. एनी वर्क ऑफ आर्ट. These are personal movable, but it will be regarded as capital asset. Exclusion का exclusion. Any securities held by FII, foreign institutional investor, as per SEBI regulations. तो बेसिकली इनको छोड़ के सब चीज कैपिटल एसेट माना जाएगा. इसको छोड़ दीजिए आप, बाकी सारा आपका कैपिटल एसेट माना जाएगा. तो मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेना है. मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेना है. ठीक है. ओके. नाउ types of capital asset basically depends upon period of holding. Depends upon period of holding. Less than equal to 12 month short term capital asset. Greater than 12 month long term. Less than equal to 24 short term, greater than 24 long term. Less than equals to 36 short term, greater than 36 long term. शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है, लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है. मैं आपको दिखाता हूं. पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज सेल. जनरली ना कौन कौन से एसेट में क्या क्या है ये अपने इसमें बात करेंगे.
securities listed in recognized stock exchange. Unit of equity oriented fund oblique UTI. 0 कूपन बॉन्ड. इन तीनों एसेट के केसेस पे अपन 12 महीना चेक करेंगे. 12 महीना से कम तो शॉर्ट टर्म, 12 महीना से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, पीरियड ऑफ होल्डिंग. अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड बिल्डिंग, इन सब में अपन 24 महीना चेक करेंगे. अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, इसका मतलब ये हो गया डिवेंचर. अदर एसेट्स. तो 12 महीना में लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज रिलायंस का शेयर मैंने खरीदा है, तो 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म. उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगा. पटवारी इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर मैंने खरीदा है, जाहिर सी बात है मेरा कंपनी अनलिस्टेड है, तो 24 महीना देखा जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग में 24 महीना देखा जाएगा. ज्वेलरी, अदर एसेट, रेसिडेंशियल हाउस, अदर रेसिडेंशियल हाउस तो इधर आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग में आ गया. बिजनेस मोटर कार मूवेबल है बट पर्सनल नहीं है, तो ये कैपिटल एसेट माना जाएगा. राइट. एक नोट है, capital gains arising from transfer of market linked debentures and unit of specified mutual fund
always short term, irrespective of period of holding. हमेशा ये शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा. ठीक है, आइए. सो अभी तक मैंने आपको कैपिटल एसेट का डेफिनेशन बता दिया और टाइप ऑफ कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कब माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कब. इसका कंप्यूटेशन समझना बहुत जरूरी है. कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, computation of long term capital gain. Full value of consideration less ट्रांसफर से रिलेटेड खर्चा, ब्रोकरेज ऑन सेल. ट्रांसफर से रिलेटेड खर्चा दैट इज ब्रोकरेज ऑन सेल. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, cost of improvement means any addition to the asset. Short term capital gain, HTCG. Exemption under section 54B/54D. So this is taxable HTCG. FVC less
Expenses for transfer means brokerage on sale. This is net sales consideration. Now, in case of long term, you need to adjust it with the inflation. Right? So that is why we call it as index cost of acquisition. We call it as index cost of acquisition. That is cost of acquisition into CII, means cost inflation index. It is given by income tax department every year. Means you need to adjust the cost of acquisition. You need to bring it to today's inflation value. CII for the year in which asset is transferred, divided by CII for the year in which asset was first held by SSC or previous year 0102, whichever is latter. It means indexation will start from 2001-2. If I have acquired the asset in 1998, it doesn't matter. My indexation will start from 0102. This is very important, whichever is latter. If I have acquired in 2004-5, my indexation will start from 2004-5. But if I have acquired prior to 0102, then my indexation will start from 0102. Indexed cost of improvement. That is cost of improvement, CII, for the year in which asset is transferred in which improvement took place. इसको बोलेंगे LTCG, less exemption. नॉर्मल 54 का भी मिलेगा, 54B का भी मिलेगा, 54D भी मिलेगा, 54EC भी मिलेगा, 54F भी मिलेगा.
तो ये हमारा आ गया फॉर्मेट देख लीजिए, जब हम लोग सम करेंगे तो और बेटर क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म अगर है तो इंडेक्सेशन का झमेला नहीं है। ये जो CII है ना, ये दे देगा नोट। जैसे प्रीवियस ईयर 0102 का है 100 और 0304 का है आई गेस 348, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, मैं देखूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। सॉरी, 2324 ये 0102 का है और ये आज इस साल का है, जिस साल हमारा जो प्रीवियस ईयर है। बीच का और भी होगा बट वो क्वेश्चन में आपको दे देगा। STT is not regarded as expenses for transfer. STT is not regarded as expenses for transfer. जो शेयर्स पे हम लोग STT देते हैं ना, वो ब्रोकरेज नहीं है। Any improvement before 1/4/2001 is not considered. If capital asset is acquired before 1/4/2001, then SSC has the option to take either purchase price or fair market value as on 1/4/2001 as cost of acquisition. मतलब क्योंकि इंडेक्सेशन 2001-2 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो या तो आप पुराना परचेज प्राइस ले सकते हैं या आप फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान सकते हैं। तो ज्वेलरी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह के केसेस में क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू हर साल बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में आप लोग को मालूम है अप टू 1 लाख एग्जेम्प्टेड होता है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में भी ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड. सो जब क्वेश्चन आएगा तो ये सब चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को. इज इट फाइन एवरीवन? आप सबको समझ में आ रहा है? ठीक है. ना ये सब जनरल पॉइंट्स बता रहा हूं मैं. सपोज करिए मिस्टर एक्स ठीक है. मिस्टर एक्स गिफ्टेड द ज्वेलरी टू मिस्टर वाई. नाउ एक्स के पास में जो ज्वेलरी था वो वाई को मिल गया. गिफ्ट इज एन exempted transfer. Therefore, Mr. X will not be liable to pay tax under the head capital gain in previous year 7-8 as gift is an exempted transfer. इसको टैक्स देने का दरकार नहीं है क्योंकि गिफ्ट एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है. ट्वेंटी 24 में मिस्टर वाई sold the jewelry for rupees 13 lakh. Mr. Y will be liable to pay tax under the head capital gain in previous year 23-24.
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पीरियड ऑफ होल्डिंग। wise period of holding will be calculated with respect to प्रीवियस ओनर। ये खासियत है, कानून में लिखा है ये चीज। अगर आपको गिफ्ट इनहेरिटेंस में कुछ भी मिला है तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से स्टार्ट होगा। मतलब 2004-5 से लेके 23-24 तक। और ये ज्वेलरी है, सिक्योरिटीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड नहीं है, जेडसीबी नहीं है, अनलिस्टेड शेयर नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, अदर एसेट में फॉल करेगा। 36 महीना देखा जाएगा। इट इज मोर देन, so this is long term capital asset. Cost of acquisition to y is equals to cost of acquisition to previous owner. इसका जो कॉस्ट है वो वही माना जाएगा जो प्रीवियस ओनर के लिए कॉस्ट था, क्योंकि मेरे को तो फ्री में मिला है। Computation of long term capital gain. Full value of consideration 13 lakh less एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर है नहीं, index cost of acquisition. So my cost of acquisition is 40,000. CII for the year 23-24. जिस साल मैंने बेचा, when the asset was first held by me, period of holding प्रीवियस ओनर से कैलकुलेट हुआ है। मतलब इन माई पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का भी पीरियड ऑफ होल्डिंग इंक्लूड किया जाएगा।
but indexation will be from the year in which the asset was first held by the assessee. When the asset was held by me, 7/8 or 01/02, whichever is later, so it will be 7/8 only. CII for the year in which asset was first held by assessee or previous year 01/02, whichever is later. Just have a check. ठीक है? 7/8, it is 129. We don't have index cost of improvement. Equal to 40,000 into 348 by 129. 107907. $1192,093. 1192,093. Less exemption nil. इस तरीके से हम लोग को सॉल्यूशन करना है. गिफ्ट में मिलेगा प्री होल्डिंग प्रीवियस ओनर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर, इंडेक्सेशन मेरे को जब से मिला, तो जिस साल बेचा और मेरे को जिस साल मिला, तो CII ऑफ द ईयर 23-24 मैंने बता दिया और 7/8 का मैंने आपको देख के बता दिया. क्वेश्चन में दे देगा. Okay. Now, when I started, this is section 45. Okay. I told you transfer means lot of things. Transfer का मतलब सेल भी होता है, ट्रांसफर का मतलब एक्सचेंज भी होता है, ट्रांसफर का मतलब कंपलसरी एक्विजिशन भी होता है, ट्रांसफर का मतलब कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड भी होता है. तो अभी हम लोग डिफरेंट केसेस के भाई, ये तो सिंपल, दिस वाज अ प्लेन वनीला प्रॉब्लम. नाउ वी आर गोइंग टू कवर डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है? इन सब चीजों का इस्तेमाल होगा व्हेन वी डू सम्स, राइट? व्हेन वी डू क्वेश्चंस वी विल बी यूजिंग दीज जनरल गाइडलाइंस. ओके. Conversion of capital asset into stock in trade.
Conversion of capital asset into stock in trade. तो बेसिकली यहां पे दो टाइप का इनकम होगा. एक होगा बिजनेस इनकम और एक होगा कैपिटल गेन्स. Remember one thing, both incomes will be chargeable to tax in the year in which stock in trade is sold. This is something very interesting. Let me just explain you with the help of an example. I acquired an asset for an amount of 50,000 in June 2003, which I converted into stock in trade in the month of November 2022. The fair market value on the date of conversion is 450, and next year the stock was sold for 6,50,000. June 2003 means 0304. Purchased capital asset. November 22 means 2223. On this date, the fair market value was. Now, on this particular date, the capital asset ceases to exist because now it becomes stock in trade. So, if I go by the definition, capital gain will be chargeable to tax in the year in which transfer took place. So, transfer took place in 22-23, but there is an exception. I know transfer has taken place in 22-23, but it will be taxable in the year in which stock trade is sold. So from year to year it will be capital gain, and from year to year it will be business income. This capital gain also will be taxable in this business income also will be taxable in this year. कैपिटल गेन भी 23-24 में टैक्सेबल होगा, बिजनेस इनकम भी 23-24, तब बेचा जाएगा.
This gap is capital gain and this gap is business income. Until the money is realized, capital gain taxable nahi hoga. I know capital gains transfer is taking place in 22-23, but it will be taxable in 23-24 when the asset is when the stock in trade is sold. जनरली जिस साल ट्रांसफर होता है उसी साल टैक्सेबल होता है, बट यहां पे डिफरेंट ईयर है. ट्रांसफर हो रहा है 22-23, year of taxability 23-24. So we have two types of income. Income arising on sale of converted stock in trade. When we have sale proceeds 6,50,000, fair market value on the ठीक है. Next we have capital gain. For that, first of all, we have to calculate period of holding. That is June 2003 to November 2020. So this is long-term capital asset. However, CG taxable in the year 23-24. Full value of consideration means fair market value on the date of conversion. Because beyond this, whatever is appreciation, that is stock in trade. So that will be business income. So in case of capital gain, only fair market value up to the date of conversion will be regarded as full value of consideration. यहां से यहां कैपिटल गेन, ऑब्वियसली हम लोग इसका इंडेक्सेशन करेंगे. ICOA और यहां से यहां बिजनेस इनकम. कुछ है नहीं एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर वगैरह, इसलिए हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं. 50,000 में खरीदा इनटू CII फॉर द ईयर 22-23 लेंगे. ट्रांसफर 22-23 का हुआ, टैक्सेबल 23-24 में हो रहा है.
22-23 का 331 और 3-4 का 109। $50,000 into 331 divided by 109, 151,835. 298,165. Okay. Very important question, high probability of coming in exam. ठीक है, आइए। Mr. Mithun purchased 100 equity share of Good Moon Company Limited on 1st April 2007. Okay, fine. Uh, 1st April 2007. Okay. Okay. बोनस शेयर मिला है दिसंबर 22 में 1:1. Bonus shares, 100 equity share,
नील। बोनस शेयर का कोई पैसा थोड़ी दिया हमने। ठीक है, अक्टूबर 23 में सबको मैंने बेच दिया है। एसटीटी को ट्रांसफर नहीं माना जाता है। नॉट एक्सपेंस फॉर ट्रांसफर, ये हम लोगों को मालूम है ऑलरेडी, वी नो दिस। तो बेसिकली हम लोग यहां पे अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। दीज आर रिगार्डेड एज ओरिजिनल शेयर्स एंड दीज आर बोनस शेयर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्लियरली बोला है मिस्टर मिठुन पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स एग्जाम, बात का बात है, assuming that he has no income other than given above fair market value of shares of Good Moon Company Limited। अच्छा, एसटीटी लग रहा है मतलब लिस्टेड शेयर्स हो गया, पब्लिक इशू फॉर पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 months will be considered, yes or no? ठीक है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अच्छा, डिविडेंड भी मिला है हम लोगों को,
डिविडेंड तो अदर सोर्सेस में जाएगा ना. Dividend income is always other sources. So 200 shares into 10, that comes to 2000. ठीक है. Okay. Now, first of all, I will do for original shares, that is 100 equity shares. What is my period of holding? 1st April 07 से लेके 1st October 23. लॉन्ग टर्म कैपिटल. ठीक है. Cost of acquisition. Now, what did I tell you? If the asset is acquired before 1st April 2001, in that case we have that option. But share के case में, for in case of shares, cost of equity shares acquired before 1st Feb 18 before 1st Feb 18 will be calculated as follows. How we are going to calculate? कैसे कैलकुलेशन करना है हम लोगों को, मैं आपको बताता हूं. हम लोग लेंगे हायर ऑफ नंबर 1 actual cost. Actual cost is 1000 per share. Higher of 1 and 2. 2 में लेंगे lower of sale proceeds, that is 4000 per share, and fair market value as on 31st January 18, that is 2000 per share. ये लॉ बनाया गया है. पहले क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर एग्जेम्प्टेड हुआ करता था. बट उसके बाद गवर्नमेंट ने जनवरी 2018 के बाद इसको टैक्सेबल कर दिया. अर्लियर लिस्टेड लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स, अर्लियर व्हाट वाज द लॉ? अर्लियर listed equity shares
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एग्जेम्प्टेड होता था, but this is no longer prevailing. Now what is present? Listed equity shares, long term capital asset, exceeding 1 lakh is taxable. ठीक है, इसमें एक चीज और डाला गया, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। इसी को बोलते हैं सेक्शन 112A। मैंने बताया ना, ये देखिए, दो केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, बॉन्ड्स डिबेंचर में नहीं मिलेगा, मतलब लॉन्ग टर्म होने के बावजूद भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि 112 बोलता है 1 लाख के ऊपर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो वो टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%। टैक्स रेट्स अपने को मतलब नहीं है। पहले ये पूरा एग्जेम्प्ट होता था सेक्शन 1038 में, लेकिन अब क्योंकि ये टैक्सेबल हो गया है, पहले तो अपन यहीं पे खत्म कर देते थे, लॉन्ग टर्म है, लिस्टेड है, एग्जेम्प्टेड, गलत है ये, दिस इज नो मोर एग्जेम्प्टेड। तो एग्जेम्प्टेड नहीं है तो कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर बिफोर फरवरी 18, सो हायर ऑफ दिस एंड दिस, हायर ऑफ 1 एंड 2, 2 में है ये दो चीज का लोअर, so that is 2000 per share। जैसे अपना जीएवी निकालते थे ना, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट, ऑन एक्सपेक्टेड होता था हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड, वैसा ही है यहां पे, सेल प्रोसीड्स और फेयर मार्केट वैल्यू में लोअर, जो आएगा उससे एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करके हायर वाला लेंगे। वहां पे पहले हायर और फिर लोअर था, यहां पे पहले लोअर एंड देन फिर हायर, क्योंकि कॉस्ट जितना ज्यादा लोगे उतना बेटर है। तो सेल प्रोसीड्स एंड फेयर मार्केट वैल्यू में जो लोअर है वो, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट और जो आएगा उसमें हायर, राइट। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल।
So this is period of holding, this is cost of acquisition. Very simple. So computation of taxable LTCG. हंड्रेड शेयर्स एट द रेट 4,000 करके बेचा है ना, 4 लाख लेस ओनली ब्रोकरेज 4 लाख का 1%. Only cost of acquisition, no indexation benefit. We have already got cost of acquisition as 2,000 per share. For other assets, it is 1/4/2001, and for equity shares, it is 1st February 2018. ये डेट याद रखना, क्योंकि पहले तो एग्जेम्प्टेड हुआ करता था, तो कॉस्ट निकालने की दरकार नहीं है, लेकिन अब ये टैक्सेबल हो गया 1 लाख से ऊपर वाला, तो उसके लिए अपन को कॉस्ट से पहले ये निकालना पड़ेगा. दिस इज फॉर इक्विटी शेयर्स. And one I gave you just the write up. This is for other assets. Generally out here we take higher only. Okay. This is taxable LTCG. However, tax will be paid only on 96,000. Tax only on 96,000 at the rate 10%. 1 lakh is exempted, exceeding 1 lakh. Now we talk about bonus shares. First December 22, 1st October 23. This is short term.
Actual cost is nil. शॉर्ट टर्म इंडेक्सेशन होता भी नहीं है. Listed equity shares, short term capital asset, short term capital gain, taxable under section 111A. 15%. टैक्स रेट से अपन को मतलब नहीं है. सौ शेयर्स को 4,000 करके बेचा है. ये आपके करिकुलम में नहीं है. टैक्स लाइबिलिटी वाला पार्ट आपके करिकुलम में नहीं है. वी विल डू इट लेटर ऑन. एज ऑफ नाउ नॉट रिक्वायर्ड. खाली अभी हमको गेन निकालना है. ठीक है. तो पहले ये एग्जेम्प्टेड हुआ करता था, इसलिए कॉस्ट का दरकार नहीं था, लेकिन अब ये टैक्सेबल हो गया है. इसके बाद अगर खरीदा है फेब 2018 के बाद, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वही मेरा कॉस्ट. लेकिन इसके अगर पहले खरीदा तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा. लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है,
तो ये सेक्शन 112A 1 लाख के ऊपर टैक्सेबल, इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म इंडेक्सेशन वैसे ही नहीं होता, 12 महीने के अंदर अंदर है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर का नील होता है। और लिस्टेड इक्विटी शेयर शॉर्ट टर्म पे 15% टैक्स है। ठीक है, ओके, बाय।